Assalamualaikum to one and all present over here. Myself Subratla from grade 6 and today I'll be presenting here a most important and interesting topic of biology, that's about limbs. Well, as all of you know that the skeletal system consists of two types, which are axial skeleton and appendicular skeleton. The axial skeleton consists of skull, ribs, vertebral column and sternum. There are total 80 bones in the axial skeleton. Tell me how many bones are there in axial skeleton? 80 bones. Nice. Now appendicular skeleton. There are 126 bones in the appendicular skeleton. It consists of limbs and girdles. The limb is made up of 120 bones and girdles consists of 6 bones. So let's move on the limbs. We should know what are limbs. What's the role of limbs in our body? Limbs, they act as a primary means of locomotion for most of the animals. ये जो limbs होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि इन्हीं की मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. हम इन्हीं की वजह से लोकोमोशन कर सकते हैं. Now parts of limbs. There are two types of limbs which are upper limbs and lower limbs. The upper limb consists of upper arm. Here you can see the upper limb consists of upper arm, the lower arm, the wrist, the palm and the fingers, and the lower limb consists of the upper leg, the lower leg, the ankle, foot and toes. So let's move on forelimb. The forelimb consists of upper arm. Upper arm has a long and a single bone that's called humerus. यानी जो हमारी अपर आर्म है उसमें एक सिंगल बोन होती है जिसका नाम होता है ह्यूमरस. क्या है उसका नाम? ह्यूमरस. Now the lower arm consists of two bones, radius and ulna. जो हमारी लोअर आर्म है इसमें दो बोन्स होती है, रेडियस एंड उल्ना. हाउ मेनी बोन्स आर देयर? टू. नेम देम. रेडियस एंड उल्ना. नाउ देयर इज आवर wrist. Our wrist is made up of small several bones that are called carpals. What's the name of the bones that are present in wrist? Carpals. Now there is our hand. Our hand is made up of 5 long bones that are called metacarpals. यानी हमारा पाम जो है इसमें 5 लंबी उंगलियां होती है जिनका नाम होता है मेटाकार्पल्स. क्या होता है उनका नाम? मेटाकार्पल्स. Now there are our fingers. जो हमारी फिंगर्स है ये 3 छोटी बोन से बनी होती है जिनको हम कहते हैं phalanges. क्या कहते हैं? Phalanges. ये कितनी बोन से बने होते हैं? 15. Now let's move on the hind limb. That's our leg. The leg consists of upper leg, the lower leg, the ankle, the foot and the toes. यानी जो हमारी हिंड लिम्ब है इसमें एक अपर लेग होती है, हमारी लोअर लेग होती है, हमारा एंकल होता है, हमारा फुट होता है और हमारे टोस होते हैं. जो अपर लेग है इसमें एक ही सिंगल बोन होती है जिसका नाम है थाई या फेमर. It is the longest and strongest bone in our body as it bears most of our body weight. ये सबसे मजबूत होती है और सबसे लॉन्ग यानी लंबी बोन होती है हमारी बॉडी में क्योंकि ये हमारा जो बॉडी का वेट है वो बियर करती है. ये सारा हमारा बॉडी वेट जो है बियर करती है, इसीलिए इसको हम लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कहते हैं. व्हाई इट्स कॉल्ड द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन? गुड. नाउ देयर इज द लोअर लेग. द लोअर लेग कंसिस्ट्स ऑफ 2 बोन्स दैट आर टिबिया एंड फिब्यूला. यानी जो हमारी ये लोअर लेग है ये इसमें 2 बोन्स होती है, एक टिबिया और फिब्यूला. टेल मी द हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन लोअर लेग? 2. नेम देम. Tibia and fibula. Now there is ankle. Here you can see there is a disc-like knee plate that's called patella. जो हमारा नी है वो उसके फ्रंट साइड में एक प्लेट लाइक डिस्क नी कैप होती है जिसे हम कहते हैं पेटिला. Now ankle. As same as our wrist is made up of several bones, in the same way our ankle is made up of several bones that are called tarsals. यानी जो हमारा एंकल होता है ये बहुत सारी छोटी छोटी बोन से बना होता है जिनका नाम है tarsals. What are them? Tarsals. Now foot. The foot is made up of 5 long bones that are called metatarsals. जो हमारा फुट होता है ये 5 उंगलियों से बना होता है जिसका नाम है tarsals. Now our toes. Toes are important for locomotion as they help our body to move from one place to another. Each toe is made up of 3 bones that are called phalanges. जैसे हमारी उंगलियों में भी 3 बोन्स होती है जिनको हम phalanges कहते हैं,
उसी तरह हमारे टो में भी 3 बोन्स होती है जिनको हम phalanges कहते हैं. Now I will ask you some questions so that I could know whether you understood or not. How many bones are there in our upper arm? What's the name? Nice. Now you just tell me what are the bones of our palm called? Our finger is made up of 3 bones. What are that called? Nice. Now here's the question that our knee has a disc-like knee palate. What's that called? Which part of the hind limb allows us to move from one place to another? Nice. Now you just tell me how many bones are there in our lower leg? Name them. Thanks for joining me to the journey. Have a nice day.